Hello friends and welcome to your digital classroom study with Sudhir. I hope you have gone through part 1 of this video lesson on the Supreme Court because that contains a lot of details, especially the manner in which the judiciary is kept independent of both the legislature and the executive. इसके साथ साथ original jurisdiction और appellate jurisdiction के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है. So please ensure that you have gone through part 1 before you come to part 2. In part 2 we'll be looking at very specific technical terms जिसकी जानकारी होना आपको जरूरी है, अनिवार्य है. You need to understand because it most definitely comes as a 1 mark, or in the longer format it can come as a 3 mark longer question also, but definitely these technical terms are extremely important. अगर आप उसको समझ लें तो उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will be able to understand it and be able to write it in your own language, but definitely the technical terms should not be missed out when you write the definition. Okay, हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की. We also spoke about the appellate jurisdiction. इसके साथ साथ there are advisory jurisdiction, revisory jurisdiction and a judicial review also. लेकिन उसके पहले let's look at some important technical terms. There are 5 in all. पहला तो हो गया habeas corpus. Okay. Now habeas corpus is essentially refers to having a body. To have the body is the literal meaning of the phrase habeas corpus. By issuing such a writ, the High Court or the Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or a group of persons or by the state itself. This writ is thus a great safeguard for the personal freedom of a citizen. ये खास तौर पे it happens जब यहाँ पर United Andhra Pradesh में when Naxalism was quite active, many a times the police used to arrest a senior Naxal or a Maoist. Now then the Naxal sympathizers जो कि overground रहते थे, the civil liberties organizations etc., they would go to the High Court and appeal as per the habeas corpus. They would say that the police, we suspect that the police has arrested XYZ who is a top Naxal leader, and therefore the police should produce him before the court, because the police would, many times it has happened that they would unofficially detain somebody, they will not show his arrest फॉर्मली, बट उनको इंटरोगेट करते थे उस दौरान और किसी को भी पता नहीं चलता था कि वे कहां पर हैं. सो व्हेनेवर the Naxals would report that XYZ leader is missing and we suspect that he's the police, these people would go to the court, the High Court in most of the cases, or it can even go to the Supreme Court and say under the habeas corpus we want the state, or it can happen that we suspect that XYZ people have abducted, kidnapped this person and we want them to produce that person before the High Court or the Supreme Court in this particular case. So habeas corpus is to have the body of the person, we want person to be produced. Okay. In Naxal cases it used to happen because they would fear in many times that the police may kill that particular leader in an encounter. दूसरा हुआ Mandamus. Mandamus in Latin it means we order. That's again the meaning of the word term Mandamus. आपको ये meanings जानना जरूरी है. It is a command or an order from the superior court to a lower or administrative authority to perform certain duty. जब superior court, and these terms are applicable to all the courts. So अगर superior court हो, Supreme Court High Court को या High Court lower court को किसी तरह की एक तरह से या किसी administrative authority जो कि उनके lower हो, which may be non-judicial also in nature, in that case such an order is known as Mandamus. तीसरा हुआ writ of prohibition. Now the word writ in general is an order given by a superior court to a lower court. That is a writ. Writ of prohibition is basically an order issued by a superior court to a lower court to stop proceedings in a case which might be in excess of jurisdiction of the lower court, because कई बारी the higher court realizes that ये lower court के प्रावधान में jurisdiction में ये नहीं आता है. It cannot be hearing such a case. Okay. जब उनका jurisdiction, like for instance, if there is a lower court which is looking after a combination of a few districts, और जो offense जो हुआ है, जो भी civil case हुआ हो या criminal case हुआ हो, उस jurisdiction के बाहर किया गया हो, तो the High Court in that particular case or Supreme Court in relation to the High Courts can say that under the writ of prohibition ये अदालत इस केस को नहीं सुन सकती because ये आपके jurisdiction के बाहर है. Okay, so that is called the writ of prohibition. The writ in general, the writ का definition is that it is an order given by a superior court to an inferior court. Okay,
Then we come to the writ of certiorari. The writ of certiorari is issued by a superior court to a judicial authority desiring to be informed of what is going on. So आप writ of prohibition और इस writ के बीच में आप confuse ना हो. So this writ is issued by a superior court to a judicial authority desiring to be informed about what is going on. So high court can tell to a lower court, supreme court can tell to a high court कि आप हमको बताइए कि इस केस में वहां पर क्या हो रहा है. We need to be informed about it, we need to be kept informed about it, we need to be in the loop about it. Though it appears similar to the writ of prohibition, इसीलिए मैंने कहा कि आप confuse ना हो. There is a difference. The writ of prohibition is issued when certain proceedings are going on. ओके तो आपको एक मार्क क्वेश्चन में इन दोनों रिट्स के बीच में भी अंतर पूछा जा सकता है. सो द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड व्हेन सर्टेन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, बट द रिट ऑफ certiorari is issued after the order has already been passed by the lower court. Okay, because it wants to be informed about what's going on, whereas the writ of prohibition is essentially to stop proceedings in a case because it does not have the jurisdiction, the lower court does not have the jurisdiction to give its verdict in that particular case. Okay, so आप इन दोनों writs के बीच में confuse ना हो, इसका अंतर अच्छी तरह से समझ लें because it can come also as a 1 mark question. पांचवा, quo warranto. It means by what order? It is issued when a person has usurped any office, and this writ thus prevents public officers from forcibly or wrongly holding a high public office. So it is basically against government officers, public servants, and it is issued when a person has usurped meaning kabja kar liya ho over any other office unlawfully, that where it is not supposed to be occupying, but it is actually begun to occupy another post. In that case quo warranto is issued. इसको भी आप याद कर लीजिए. Its technical term means by what order. It's almost like a question कि किस order से आप इस पद पर आपने इसको ऑक्यूपाई किया है. सो दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड बाय द कोर्ट टू दैट पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक अथॉरिटी. क्लियर? सो दिस इंपॉर्टेंट रिट्स जो 5 हैं आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए. आई कैन नॉट ओवर एस्टिमेट इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एडवाइजरी jurisdiction. The Supreme Court has advisory jurisdiction to give its opinion on any question of law or in fact of public importance as may be referred to it by the President of India. Because कई बार होता है कि राष्ट्रपति को भी अगर किसी लॉ को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी तरह की लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े, सो ही कैन फॉर्मली रेफर. इनफॉर्मली वे कई सारे जो लीगल एक्सपर्ट से भी बातचीत करते हैं अगर कोई वेरी कंटेंशियस और कॉन्ट्रोवर्शियल बिल की बात हो रही हो. लेकिन इवन फॉर्मली ही कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर फॉर्मल एडवाइस, ऑफिशियल एडवाइस फॉर ऑन अ पर्टिकुलर कंटेंशियस बिल. द सुप्रीम कोर्ट में बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन in 2 classes of matters in an advisory capacity. Any question of law may be referred to the Supreme Court if the President considers that the question is of public importance and it is necessary to obtain the opinion of the Supreme Court. Such opinion of the Supreme Court is advisory, okay, and it is not binding on the President nor is it executable as a judgment of the Supreme Court. तो ये judgment और ये इस तरह का जो एडवाइस है उसमें अंतर, साफ अंतर है कि ये एक तरह का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है. राष्ट्रपति ने उनसे सलाह मांगी, उनको फॉर्मली ये सलाह दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति पर ये निर्भर करता है कि क्या वे इस सलाह को मानना चाहते हैं या नहीं. और दूसरी बात, दिस काइंड ऑफ एन एडवाइस विल नॉट हैव द सेम हेफ्ट, not have the same significance or importance as a judgment of the Supreme Court. तो ये साफ अंतर रहता है. You could even be asked, if it's somebody who's an intelligent examiner, he may ask what is the difference between an advice of the Supreme Court and a judgment of the Supreme Court. समझे? तो advice is to the President of India on a particular matter, but it is not binding on the President of India, and it is definitely not like a judgment, whereas a judgment is always binding once the Supreme Court delivers the final verdict. The second class of matter जहां पर इस तरह की सलाह दी जा सकती है in an advisory capacity is disputes arising out of pre-constitution treaties and agreements which are excluded from original jurisdiction by Article 131. कि Constitution of India बनने के पहले की जो संधियां
कुछ थी, या किसी तरह के एग्रीमेंट्स व्हिच आर साइंड बाय 2 और मोर पार्टीज, और जिनको भी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली इंटरवीन एंड प्ले ए रोल। उसके अलावा जो भी कुछ ऐसा कोई संधियां हैं, उसके ऊपर भी वे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत रोल प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर। नाउ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 इज empowered to review any judgment or order made by it with the view to removing any mistake or error that may have crept in the judgment. Now this is a very good kind of a revisory jurisdiction because it kind of does allows the Supreme Court to indulge in what I call self correction, कि अगर उनके किसी भी ऑर्डर में गलती हो गई हो तो वे रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स डिसीजंस आर ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। सो 3 कारणों, एक तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो हो गया वो रिकॉर्ड पे जाता है। दूसरा, जो भी उनको जो भी वर्डिक्ट दिया जाए उसको कई साल तक भी एक प्रेसिडेंट के रूप में माना जाता है और उसको कोट किया जाता है। in the case between XYZ and the state of India and the verdict given by the Supreme Court in the year 1982 for instance, उसमें इस तरह का जजमेंट किया गया था, तो सिंस ये केस वैसे ही है तो उसको एक प्रेसिडेंट के रूप में साइड किया जाता है। तो अगर वो 1982 या 1987 जो भी साल हो, उस समय पर किसी तरह की गलती की गई हो तो उसका असर इस नए केस पर भी पड़ेगा। तो ये बहुत लाजमी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर अगेंस्ट एनी एरर्स क्रीपिंग इनटू एनी ऑफ इट्स जजमेंट्स। Okay, so which is why if the Supreme Court at any stage feels that उसके किसी भी जजमेंट में कोई भी गलती क्रीप इन हो गई हो तो अंडर रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन वे उसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बात, तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर द सुप्रीम कोर्ट सेज एज पार्ट ऑफ जजमेंट, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी अदर court in India. So in that sense the responsibility is huge as far as the Supreme Court is concerned in order to ensure and guard against any kind of errors creeping in. Now let's come to judicial review. What is a judicial review? Now the Supreme Court is the final interpreter of the Constitution and its decision is final. We know that. It has the power to review laws passed by the Union or the state legislature. The Supreme Court can declare a law ultra vires or null and void. Ultra vires mean null and void if it is against the letter and spirit of the Constitution. Clear? Or contravenes any provision of the Constitution. This power is referred to as the power of judicial review, right? So it can declare any law as null and void if they feel that it goes against the any provision of the Constitution of India, and this is called as a power of judicial review. The minimum number of judges to hear and decide a case involving the interpretation of the Constitution shall be 5. So hamesha a 5 judge bench only can interpret the Constitution. That is compulsory. It cannot be a 3 judge or a 2 judge bench or a single judge bench. Now the Supreme Court has the power to review all the national and state laws and executive orders and declare them as null and void. It has the final pause, and in 1970 they had declared the following acts of parliament as null and void: the presidential order concerning derecognition of the former princes, the Banking Companies Act of 1969 for the nationalization of 14 banks, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया था, उसमें भी उसको null and void डिक्लेयर कर दिया गया था। नाउ किस जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? नाउ ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि हो सकता है कई बार एक कानून को ठीक तरह से वर्ड ना किया हो, किसी तरह का डाउट हो, तो उसको करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की को जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू। दूसरा, द लेजिस्लेचर मे नॉट, जो विधायक हो, इट मे नॉट हैव द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंटरीज मे नॉट रियली हैव द नेसेसरी लीगल एक्यूमेंट, जो कानूनी जानकारी होनी चाहिए वे नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वे करेक्टली उस कानून को इंटरप्रेट कर सके, और ये फंक्शन सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट ही निभा सकता है। नाउ लेट्स कम to what we call the court of record. Now a court of record is a court whose judgments are recorded for evidence and testimony. The judgments are in the name of nature of precedence, जैसे मैंने अभी आपको एक 1982-87 उस तरह का आपको एग्जाम्पल दिया। That is, the high courts and other courts are bound to give a similar decision in a similar case. इसीलिए जुडिशियल रिव्यू की भी खास जरूरत, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन की भी खास इंपॉर्टेंस बन जाती है। एंड
The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. Now that's the manner in which it acts like a guardian of the Constitution. जो संविधान का एक तरह से सुरक्षा करता है, वे सुप्रीम कोर्ट का मेन फंक्शन है. इसके साथ साथ थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी फंक्शंस भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के. पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट. ही ऑल्सो मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्डक्ट ऑफ एडवोकेट्स, जो बार काउंसिल हो, और अदर पर्सन्स हु आर अपीयरिंग बिफोर इट. The Supreme Court says that the Chief Justice of India's recommendation to transfer judges of high courts was not binding on the government if the recommendation was made without consulting जो 4 दूसरे जो senior most judges हैं Supreme Court के, उनसे सलाह विमर्श करने के बाद ही वे सरकार को अपनी सलाह दे सकते हैं. So that is something which has been done as a check and balance on the Chief Justice of India's office itself. इसके साथ साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसको कि PIL कहते हैं, दैट इज समथिंग विच हैज बीन डन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एंटायर लीगल प्रोसेस. की कोई भी नागरिक भारत का एक PIL दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी, जस्ट बाय राइटिंग ऑन ए सिंपल पोस्ट कार्ड और एप्लीकेशन, और उसके ऊपर भी एक तरह से केस फाइल किया जा सकता है. द PILs कैन बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट especially when it is a matter involving public interest, which is why it is called public interest litigation. litigation यानी कि जो कानूनी प्रोसेस होता है उसको litigation कहते हैं. इसके साथ साथ 3 और टर्म्स हैं which you will need to know. One of course is a judgment, which is a decision pronounced by a court determining the rights of the parties in the proceedings, right? The second is contempt of court, जिसके बारे में हमने काफी बार सुना और मैंने आपको बताया भी. Disrespect for the dignity or the authority of court is known as contempt of court. It can involve bad behavior inside a court. It can involve refusing to answer a question. अगर आपको विटनेस के तौर पे बुलाया गया है या आप कोर्ट के जो कामकाज हैं उसमें आप दखलंदाजी करते हैं, जज के साथ आप बदसलूकी करते हैं, यू स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली टू दी जज, और जो अदालत ने किस तरह का जो ऑर्डर पास किया है अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, तब भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में आपको समन किया जा सकता है, आपको सजा सुनाई जा सकती है. तीसरा हुआ रूल ऑफ लॉ. Now, supremacy of law implying that no person can be made to suffer in body or goods except for a breach of law established in the ordinary court of the land. Constitution grants wide powers to the High Courts and Supreme Court for preservation of rule of law. Rule of law मतलब कानून सबसे सर्वोपरि है. The supremacy of law is upheld by the Supreme Court and also by the High Courts, that no person can be made to suffer in body, that is उनको किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए, या उनके जो प्रॉपर्टी है, घर हो, फैमिली हो, उसको भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए किसी भी किसी भी कानून का उल्लंघन करके. सो द रूल ऑफ लॉ शैल प्रिवेल. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने काफी सारे जो वर्डिक्ट होते हैं उसमें दे यूज दिस फ्रेज दैट द रूल ऑफ लॉ शैल प्रिवेल, कि जिस तरह के कानून हमको संविधान में बनाए गए हैं दैट नीड टू प्रिवेल एज फार एज द country is concerned. Okay, so this is as far as part 2 of the chapter of the Supreme Court is concerned. I hope it's all clear. Any doubts, write in the comment section. Do like and share this video, and also don't forget you need to subscribe to Study with Sudhir. Thank you very much for watching.